History class 12th. Name Jagdish Kumar. Qualification MA B.Ed. Designation lecturer in history. School HSS नाक्सिनी. और बुक हम पढ़ने जा रहे हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड किताब है ये। तो यूनिट इसका 5वां है एग्रीजन रिलेशन, जिसके बारे में हमने एक दो क्वेश्चन पहले भी पढ़े। आज भी हम एग्रीजन रिलेशन एंड द एन अकबरी का अगला क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन का नाम है व्हाट डू यू नो अबाउट द एन अकबरी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। एन अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं और इसका रिजल्ट क्या निकला। एन अकबरी इज ए वैल्यूएबल बुक बाय अबुल फाजल। तो अबुल फाजल द्वारा लिखी गई बुक है ये अकबर के टाइम में। ए कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर, इट वाज कंप्लीटेड इन 1598 ड्यूरिंग द 42nd ईयर। 42 साल के अरसे में अब अकबर रूल। इट वाज द थर्ड एमिनेंट बुक ऑफ हिस्ट्री entitled अकबरनामा written by Abul Fazl. The main objective of an Akbari was the declinate such a picture of empire of Akbar where strong ruling class maintained social harmony and cohesion. Besides, it wanted to record detailed information of how Akbar governed his empire. इसमें दिया हुआ है कि अकबर ने कैसे हुकूमत की, कैसे गवर्न किया। It was compiled as a compendium of imperial regulations as a gazetteer of the empire. It has been translated into English in 3 parts. इसको ट्रांसलेट भी किया गया है अकबरी को इंग्लिश में 3 पार्ट्स में। The first part was translated by Henry Bloch Menon at Calcutta in 1873 and 2 other parts of this book were translated in English by HSS Jarrett at Calcutta respectively 81 to 1894 AD. An Akbari is not only a descriptive and statistical survey of the Mughal Empire but also its politics and administration system. इसमें मुगल एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया गया है। It is a vivid description of Akbar's court administration, state official, army official, resources of revenue, geography and statistical data of Akbar, states and information. It also describes literary cultural and religious customs of the society. Religious customs क्या थी सोसाइटी में। It also tells us a lot about Hindu philosophy and Muslim saints. हिंदू फिलासफी और मुस्लिम साइंस के बारे में भी इसमें दिया है। Undoubtedly an Akbari is the main valuable information about Akbar rule of empire. Dr. G.L. Mehta, a famous historian, say about aptly says after Kautilya's Arthashastras, the An Akbari is the second greatest work of historical significance produced by an Indians. कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक के बाद एन दूसरा नंबर आता है। द लाइक ऑफ विच इज हार्ड टू फाइंड इवन इन द एनल्स ऑफ यूरोपियन हिस्टोरिकल लिटरेचर। एन अकबरी इज डिवाइडेड इनटू 5 daughters books. The first part is called Manzil-e Abadi. It describes Akbar's court, imperial households and its maintenance, mint, prices and food grain. इन सब चीज़ के बारे में दिया हुआ है एन अकबरी में। रॉयल स्टेबल्स एंड हारमनी, रॉयल स्टेबल्स हारमनी के बारे में भी है। द सेकंड डॉक्टर पार्ट इज कॉल्ड सिप्त Abdi. It gives a detailed information about civil and military administration. Civil and military administration के बारे में भी दिया हुआ है। It also includes short biographical sketches of mansabdar, scholars, poets and artists. The third chapter was called the Malik Abdi. It is an important part of the book. It gives a detailed information about the physical position of the empire and the rates of the revenue. और रेवेन्यू के बारे में भी दिया हुआ है। It gives an account of measured land of each सूबा, सरकार, परगना and महल्स के बारे में भी दिया हुआ है। It also tells us about the fixed amount of land revenue. लैंड रेवेन्यू जो फिक्स था उसके बारे में भी दिया हुआ है। It gives an important statistical information about the 12 provinces of Akbar. 12 जो प्रोविंस अकबर के थे उनकी भी डिटेल है। It presents a vivid picture of the geographic
topography and economic profile of all the subas and their administrative and physical division के बारे में भी दिया हुआ है. And Akbar provides credible information about Sarkars. Its information is classified. Each table was 8 column which provided us the following information: Pargana, Mahal, Killa, Fort, Arzi and Zemni, Paimudda measured area, Nakdi or revenue assessed in cash, surgical grounds of revenue in charity, Zamindars, and column contains amount the cost Zamindars and their troops having their horsemen, sawar, foot soldier, paida, payada and elements. Payada means पैदल जो ज़मीनी फौज. Elements file. In fact, the part gives real picture of the agrarian society in northern India. The fourth chapter of the An Akbari deals with the religious, literary, culture, tradition of the people of India. The fifth chapter is a collection of Akbar auspicious sayings. From the above description, it is quite clear that An Akbari is not only a detailed description of the various departments of the Mughal administration. सबके बारे में डिटेल में है. इट ऑल्सो ए डिटेल्ड अमाउंट ऑफ द लाइफ एस्पिरेशन बिलीव्स ऑफ द कॉमन पीपल. इट कंटेन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन. अबुल फाजल रिवाइज इस मैन्युस्क्रिप्ट 5 टाइम, इन 5 बार उसने इसका रिवीजन किया कि कोई गलती ना रही. इट ट्राइड हिज बेस्ट टू टेस्टिफाई, क्रॉस चेक, ऑथेंटिकेटिंग वर्बल और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम the other source. Also he had written all the statistical in words also that there is chance of any mistake. The statistical data provided by Abul Fazl is undoubtedly his great achievements. Undoubtedly, if we call an Akbari as a mine of information for us about Mughal Empire during Akbar's reign, it will not be an exaggeration. All the information provided by him proved quite valuable for the coming historians. In the words of Dr. A.B. Pandey, a famous historian, An Akbari presents such a detailed amount of the organization of the government, philosophy and literature of the people and is nowhere met with in medieval historiography. There is no doubt that An Akbari a new drawback. Statistical data given about all the subas is not uniform. For example, detailed information was compiled about the cost of composition of Zamindar, but no such information is available about the Bengal and Odisha. Secondly, the physical data about the many subas is remarkable, but there is not any information about the prices of goods and due to the wages. प्राइस और वेजेस के बारे में क्लियर नहीं है एन अकबरी में. The data about the price and wages pertain to an area around Agra and imperial capital of the Mughal. Thirdly, there are mistakes in the addition of accumulation of data. It is possible that the associates of Abul Fazl might have error while nothing down in the relevant data. Generally, such lapses are minor in nature. तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है. कर